और उनके दोस्तों को सजा दिलवानी, यही थी उनकी इकलौती आस्था। बढ़ती मुश्किलों के बोझ तले दबी थी जो वैश्यों की जान, अब इस सत्र न्यायालय के सामने सवालों में घिरी थी। अब इस सत्र न्यायालय के सामने सवालों में घिरी थी इनकी पहचान। तारीख मिली थी आज की इन्हें, सवाल केवल एक, क्या इस अदालत के पास थे इनको इंसाफ दिलाने के औजार, या आज आंखें बांधे खड़े रहेगी इंसाफ की वो जानी मानी मूरत। केस नंबर 45453। खड़े हो जाइए। की कार्यवाही शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे। Your Honor, this is a case of gang rape. एक मासूम लड़की, इसका नाम था चंदा. She was gang raped by Vijay Singh and his 7 other men. Yes, I said मासूम. Because Your Honor, उसका सेक्स वर्कर होने से और उसके मासूम होने का कोई रिलेशन नहीं है. In this case, I will produce enough evidence to prove beyond reasonable doubt that the accused in the present matter, Vijay Singh and 7 others, are guilty. That's all. Defense, your opening. Your Honor, all the arguments by the prosecution are baseless. ये सब सिर्फ एक साजिश है मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए, उनसे पैसे निकलवाने के लिए। जो हमारी विक्टिम है चंदा जी, she used to work in a brothel. वो एक brothel में काम करती थी, Your Honor, which is illegal under Section 3 Immoral Trafficking Prevention Act 1956. Your Honor, the jurisprudence states that if you seek justice, you must come with clean hands. पाटी जी, यहाँ तो किसी के भी हाथ साफ नहीं थे। That's all. Brothel होने से उसका क्या रिलेशन है? बताते हैं लॉजिकल. बताते हैं. Silence in my court. Your Honor, I would like to produce my first witness, the Ayub Jairam Shinde. Permission granted. जयराम शिंदे हाजिर हो। हाथ रखिए और कहिए, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जयराम शिंदे, जी सर। किस पोजीशन पे हैं आप पुलिस में? सर सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर? जी सर। FIR लिखी है आपने कभी? सर 3 साल का तजुर्बा है, कईयों FIR लिखी है और कईयों को तो अंदर ही डाला है। तो FIR से रिलेटेड सारे लॉज भी बताऊंगे आपको। कमाल करती है मैडम, कैसे कैसे वकील आते हैं आपके कोर्ट में। 154 CRPC आके पढ़िए जाके, समझ में आ जाएगा आपको FIR का लॉ। लगता है आपने सिर्फ 154 ही पढ़ा है, बाकी के लॉज नहीं पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए कोर्ट को कि जब कोई FIR लिखाने आता है तो आप उससे पूछताछ करते हैं या फिर FIR लिख देते हैं? सर पुलिस का काम ही है FIR लिखना। मतलब पुलिस उसी लिए बनी है सर, कोई भी अपनी परेशानी लेके आए और FIR वहाँ पे लिखी जाए। चंदन आपकी कोई लड़की FIR लिखवाने आई थी आपके पास? अच्छा वो कोठे वाली? जी हाँ। जी सर आई थी। कोठे वाली आई थी? आई थी।
आपने उसकी एफआईआर लिखी? मैडम झूठ बोल रही थी सारा समय, एकदम सामने झूठ बोल रही थी पुलिस के, बोल रही थी रेप हुआ है। और सर आप ही बताइए उनका किनका? उनका किनका? This is the problem of our society. Just because she was a sex worker, उसका रेप ही नहीं हो सकता। मेंटालिटी आपकी। She consents to sell her body for money, but not for rape. आप कानून पढ़ा रहे थे मुझे। थोड़े कानून मैं पढ़ाऊं आपको। सेक्शन 166A of IPC। अगर किसी लड़की ने रेप को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है, यू कैन नॉट से नो टू रजिस्टर दी एफआईआर। सर वो झूठ बोल रही थी मैडम, सामने बोल रही थी कि विजय साहब ने किया है, एकदम झूठा इल्जाम लगा रही थी मैडम। तो ये तो एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है ना कि वो सच बोल रही है झूठ। आप सिर्फ आवाज सुन के पहचान लेते हैं? अरे ये कैसा टैलेंट है भाई, हैं? सिर्फ खुली है आपकी। Your Honor, this police officer is an irresponsible police. इन जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से चंदा और उसकी जैसी हजारों लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। He should be punished. That's all. Defense, cross examination. मैं कुछ कहना चाहूंगा। गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, पर गलती पुलिस प्रशासन से हुई। उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, जिसकी वजह से चंदा जी का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाया और प्रॉपर फैक्ट सामने नहीं आ पाए। आपको केस चलाना डिपार्टमेंट पुलिस के खिलाफ चलाइए, स्टेट के खिलाफ चलाइए। मेरे क्लाइंट को क्यों घसीट रहे इस मैटर में? आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अभी के लिए आप जा सकते हैं। Call upon the next witness. Your Honor, the next witness is medical officer Meenakshi. Call her in. मीनाक्षी हाजिर हो। मीनाक्षी जी, कोर्ट को अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। जी मैं मेडिकल सर्टिफिकेट काम करती हूँ। पुलिस के पास जो भी केसेस आते हैं उनका एग्जामिनेशन मैं करती हूँ और एग्जामिनेशन के बाद रिपोर्ट्स वापस पुलिस को सबमिट करती हूँ। तो आपके पास रेप वगैरह के भी केसेस आते हैं? जी हाँ। कोर्ट को ये बताइए, जब कोई रेप का केस आता है तो आप क्या क्या चीजें नोटिस करती हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन में ऐसी क्या क्या चीजें आनी चाहिए जिससे प्रूव हो कि एक लड़की का रेप हुआ है? जी there should be a rupture of the cervical wall, extensive internal bleeding and signs of hematoma in the private parts of the body and marks of struggling on the body parts. तो इन सब चीजों से अगर आए किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में तो इट कैन बी सेफली अज्यूम दैट गर्ल वाज रेप्ड। जी अच्छा, एक और बात बताइए कि मान लीजिए किसी के साथ एक दिन वारदात हुई, तो उसके कितने टाइम इंटरवल तक आपके पास उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, अदरवाइज एविडेंसेस मिट सकते हैं? within 72 to 96 hours. तो विद इन 72 टू 96 आवर्स अगर आपके पास कोई लड़की लेके आता है या कोई विक्टिम लेके आता है तो एविडेंसेस बचने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब वरना नहीं। जी चंदा नाम की कोई लड़की आई थी आपके पास? जी हाँ 18th April. और योर ऑनर, रेप हुआ था 13 तारीख को, 13 अप्रैल। 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन योर ऑनर। 5 दिन बाद चंदा को मेडिकल ऑफिसर के पास लेके आया गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे जो साइंस ऑफ स्ट्रगल्स थे, जो भी सिम्टम्स थे, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन था, वो वीक हो गया। योर ऑनर,
इस इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जो कि पुलिस के सेंसिटिव ना होने की वजह से हुई। चंदा क्यों सफर करे? मेरे क्लाइंट को क्यों सफर करने से पाटिल जी? रिपोर्ट डिसाइड करें। मिश्रा जी, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अच्छा, डॉक्टर मीनाक्षी राव, क्या मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव हो सकता है कि रेप हुआ है? जी श्योरली नहीं कह सकते। तो मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या पाया गया बॉडी? उनके बॉडी पे नॉर्मल कट्स और ब्रूजेस पाए गए हैं। तो ये कट्स और ब्रूजेस हैं, ये क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्सीडेंट्स और इंजरीज में भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी, क्या आप जानती हैं वो क्या काम करती थी? जी नहीं। डॉक्टर रावत, शी वॉज अ सेक्स वर्कर। मतलब उनका जो काम है उसमें ऐसी इंजरीज और ब्रूजेस सेक्सुअल इंटरकॉर्स में हो सकते हैं, बताइए। जी बिल्कुल। योर ऑनर, यहाँ केस रेप किसने किया है ये प्रूव होना तो दूर की बात, यहाँ तो यही प्रूव नहीं हो पा रहा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। त्रिपाठी साहब, कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद ना करें। कोर्ट सबूत मांगता है, अजम्पशन नहीं। That's all. You may leave. Your Honor, I would like to call my next witness, Sanjay Chaurasia. बुला लीजिए। संजय चौरसिया हाजिर हो। संजय चौरसिया जी, कोर्ट को ये बताइए आप काम क्या करते हैं? वकील साहब, हम पान की दुकान चलाते हैं। किस गली में चलाते हैं पान की दुकान? दुर्गा ताई का जहाँ कोठा है वहीं हमारी दुकान है। वहाँ दुकान है। क्या उस कोठे में चंदा नाम की कोई लड़की रहती थी? जी वकील साहब। और अब विजय सिंह नाम की किसी आदमी को जानते हैं? ऐसी बात करते हैं वकील साहब, उनको तो इलाके में कौन नहीं जानता, उनका सबका चलता है। विजय सिंह जहाँ चंदा रहती थी वहाँ पे आया करता था? जी वकील साहब। आता था? हाँ हाँ। Are you sure? जा सकता है। क्या तुम श्योर हो? मतलब आपका पूछने वो आते थे? हाँ, वो आते थे ना? हाँ हाँ हाँ। उनके कोठे में आने की फ्रीक्वेंसी क्या थी? क्या वकील साहब? मतलब वो कोठे में कितने टाइम इंटरवल में आ जाया करते थे? मंथली, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार? अच्छा, महीने में 4-5 बार आते थे। 4-5 बार आ जाया करते थे, राइट? जी वकील साहब। 12 अप्रैल की रात को आए। जी वकील साहब। याद कर दो, बताइए अच्छे से सोचिए। 12 अप्रैल की रात को वो वहाँ पे आए थे। हाँ हाँ वकील साहब, आए थे, उनका पूरा ध्यान है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। चंदा को 12 अप्रैल की रात को कोठे से ले जाया गया। विजय सिंह उस कोठे में आए थे। Which proves that विजय सिंह चंदा को कोठे से लेके गए थे और उन्होंने उसका रेप किया अपने 7 आदमियों के साथ। That's all. समझे जी? इस कोर्ट में ये बताइए कि जो जहाँ पे आपकी दुकान है, जहाँ पे दुर्गा देवी का कोठा है, वो किसकी जमीन पे बना? वकील साहब, वो विजय साहब की जमीन पे बना है। विजय साहब, योर ऑनर, अपनी जमीन को महीने में 1-2 बार विजिट करना कौन सा गुनाह हो गया? चलिए ये बताइए कि आपने ये बोला था कि विजय बाबू वहाँ पे अक्सर आया करते थे, ये बोला आपने? क्या 12 तारीख को भी आए थे वो वहाँ पे उस दिन? जी वकील साहब, आए थे। तो ये बताइए, अकेले आए थे किसी के साथ आए थे? सब अकेले ही आए थे। अकेले आए थे? सोच लीजिए। हाँ हाँ,
अकेले ही अकेले। और जो वापस गए थे तब भी अकेले थे कि किसी को संग लेके गए थे? सरकार अकेले ही गए। अकेले गए थे? हाँ हाँ सरकार अकेले। तो आपके कहने का मतलब है अकेले आए और अकेले चले गए? जी वकील साहब। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन साहब के आई विटनेस जो थे, चश्मदीद गवाह, वो खुद ये कह रहे हैं कि विजय जी अकेले आए थे और अकेले चले गए थे। चंदा जी का कोई जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे। That's all. अब जा सकते हैं। Your Honor, I would like to call my next witness, Angela Thomas. Proceed. एंजेला थॉमस हाजिर हो। एंजेला थॉमस, कोर्ट को अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। जी मैं पिछली 4 साल से सखी एनजीओ में काम करती हूँ और साथ में एक प्राइवेट क्लिनिक की नर्स हूँ। और एनजीओ में एज अ नर्स आपका काम क्या होता है? एनजीओ में मैं और श्रेया मेडिकल डिपार्टमेंट संभालती है। मेडिसिन, वैक्सीन ये सब सेक्स वर्कर्स के लिए देती है। हमारी एनजीओ 24/7 उसके लिए सारे मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी हम भी करते हैं। अगर किसी प्रोस्टिट्यूट का रेप हो जाए तो भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं? जी हाँ। आपने चंदा का मेडिकल एग्जामिनेशन किया था? जी साहब किया था। कब किया? 14 अप्रैल। That means within 72 to 90 hours आपने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया। जी। उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है? In her medical examination reports, vaginal swabs were found. Signs of struggle were found in her hands, shoulders, and her vaginal region. Also, more than 2 people's semen samples were found in her body. Your Honor, it proves that Chanda was raped that night by not just one man, because more than 2 semen samples were found on her body. सिर्फ यही नहीं, उसकी बॉडी में साइंस ऑफ स्ट्रगल भी थे। वो 2 लोग कौन थे? Your Honor, वो 2 लोग थे विजय सिंह और उसके आदमी। और सीमेन सैंपल सिर्फ 2 से ज्यादा थे। That's all, Your Honor. Defense. ओके, एंजेला थॉमस, ये जो लैब है जहाँ पे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये लैब प्राइवेट है या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड? How does that matter? इट मैटर्स त्रिपाठी जी, पूछ लीजिए। जी मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। मतलब गवर्नमेंट टेस्ट पास नहीं कर पाई आपकी लैब? योर ऑनर, विटनेस की टेस्टिमनी क्रेडिबल है ही नहीं, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लैब में यूज होते हैं, जो भी मेथड्स फॉलो होते हैं, वो गवर्नमेंट सेट स्टैंडर्ड्स के हैं ही नहीं। त्रिपाठी जी प्रूव हो नहीं पाया अभी तक। You may leave. कौन बुला रहा है next witness? Your Honor, I would like to call upon the next witness, Gudu Jaiswal, in the court. Proceed. गुड्डू जायसवाल हाजिर हो। शक्ल ही रेप जैसी। आप विजय जी को जानते हैं? गुड्डू जी? आप 12 फरवरी की रात को दुर्गा देवी के कोटे पे थे? जी गए तो थे। गए थे? जब वापस गए थे किसी को संग लेके गए थे? चंदा को लेके गए। क्या लेके गए? और कोई नहीं था आपके साथ? जी नहीं, अकेले गए थे? पार्टी में लेके गए थे।
योर ऑनर, इनकी गवाही से भी वही बात जाहिर होती है कि चंदा जी इनके साथ थे, और पान वाले जो आए थे हमारे संजय जोरसिया जी, उनकी बात से भी साबित होता है कि विजय जी अकेले आए थे, अकेले गए थे। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपस में कहीं नहीं मिल रहे हैं। आपकी सोच और लॉजिक भी 2 पॉइंट से कभी मिलती नहीं। कोर्ट में ये बताइए कि आप श्योर हैं कि आप अकेले आए थे और अकेले गए थे? जी श्योर है। झूठ बोलने की सजा पता है कोर्ट में? आपको क्या पता होगी, आपका काम ही रेप करने है। ये झूठ हुआ नहीं है। आप पैदल आए थे उस दिन कोटे में? गाड़ी से आए थे। खुद की गाड़ी से आए थे? नहीं, तो किसकी गाड़ी से आए थे? जी भैया की गाड़ी थी हमारी। विजय सिंह आपके भैया लगते हैं? जी हाँ, बचपन से ही संबंध है हमारे परिवारों के। योर ऑनर, इसने अभी अभी कोर्ट में कहा उनके चीफ एग्जामिनेशन में कि इसका विजय सिंह से कोई रिलेशन नहीं, मगर हाँ, ये आया तो पैदल था मगर गया किसी और की गाड़ी में था, और वो गाड़ी विजय सिंह की थी और गया चंदा के साथ था। योर ऑनर, ये सीसीटीवी की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि गुड्डू जायसवाल चंदा को विजय सिंह की गाड़ी में लेके गया था। विजय की गाड़ी में लेके गए थे। Your Honor, this proves that Chanda was taken by Guddu Jaiswal also with Vijay Singh, and she was raped that night. That's all, Your Honor. त्रिपाठी जी, मैं आपकी गाड़ी लेके मर्डर कर रहा हूँ तो बताओ आपने क्या मर्डर? आंसर करिए। ये मेरा कोर्ट है, यहाँ पे कौन कब क्या बोलेगा वो मैं डिसाइड करती हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा दूंगी तुम दोनों पे। लाइया अगली विटनेस। योर ऑनर, मैं अपनी अगली विटनेस दुर्गा देवी को बुलाना चाहती हूँ। बुला लीजिए। दुर्गा देवी हाजिर हो। सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो कहेगी सच का ही, सच के सब और कुछ नहीं कहती। दुर्गा देवी, क्या आप वही कोठा चलाती हैं जहाँ चंदा रहती है? जी। दुर्गा देवी, क्या आप जानती हैं भारत में कोठा चलाना गैर कानूनी है? योर ऑनर, it is illegal to run brothel and living on the earnings of a prostitute under Section 3 and Section 4 of the Immoral Trafficking Prevention Act 1956. It is also illegal to rape. Don't you realize that? पार्टी की एक प्रूव हुआ नहीं अभी तक, तो आप assumption अपने पास रखिए। मैं बात करूँ। दुर्गा देवी, क्या नंदिनी नाम की लड़की भी आपके कोठे में रहती है? जी। योर ऑनर, हमारी फाइंडिंग से पता चला है कि वो नंदिनी नाम की सेक्स वर्कर जब इनके कोठे पे आई थी वो मात्र 17 साल की थी। दैट मीन्स शी वॉज अ माइनर। आपको शर्म नहीं आती है छोटी लड़कियों से, माइनर से ऐसे घिनौने काम कराते हुए? अरे औरत के नाम पे मतलब क्या कर रही हैं आप? कैसी औरत है आप? अरे जो औरत ऐसे घिनौने काम करा सकती है, कुछ झूठी गवाही बोल भी सकती है, झूठे केस रेप के लगा सकती है। जो आदमी रेप कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। त्रिपाठी जी, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। अब बार बार ये बोलिए मत कोर्ट में। त्रिपाठी जी सबूत ले आइए, कर दीजिए। योर ऑनर, ये झूठे इल्जाम लगा के पैसे ऐंठना चाहती है मेरे क्लाइंट से और कुछ नहीं। केस एकदम साफ। योर ऑनर, जब ये प्रूव हो ही चुका है कि
मतलब केस फेक है, कुछ प्रूफ कर नहीं पाते, तो क्यों इस कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? खत्म कर दीजिए, बेहुदा महिलाएं, ये वक्त बर्बाद हो रहा है कोर्ट का। बर्बाद? सही बोला। क्यों मैम साहब? आप अपना काम करती है, आपको अपने काम का पगार मिलता है, उस काम के पगार का आपको समाज में इज्जत मिलता है। ये बड़े बड़े वकील ये अपने काम करते हैं, पगार का इज्जत मिलता है, तो क्यों खराबी हमें? अरे दुर्गा देवी सीना ठोक के बोले कि हाथ चला दिया वो खोटा। क्यों? क्या खराबी है इसमें? हाँ, बेचते हैं हम शरीर अपना, लेकिन इन नाकारों ने तो अपना ज़मीर ही बेच डाला। अरे आधी मरी हुई हालत में आई थी वो, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने कहा यहाँ पे वक्त बर्बाद हो रहा है, पहले रिपोर्ट लिखवा। उस शिंदे के पास गए तो उसका भी वक्त बर्बाद हुआ, और अब आज इस कोर्ट में आप लोगों का भी तो वक्त बर्बाद ही हो रहा है ना? क्यों? जब अपना वक्त बर्बाद करना होता है तो कैसे यू नोट गट्टी फेंक के हम पे आते हैं वक्त बर्बाद करने। मैम साहब, आज आज इन लोगों के वक्त बर्बाद की वजह से ना मेरी चंद्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई है मैम साहब। मेरी चंद्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई है मैम साहब। योर ऑनर, इनके चीफ एग्जामिनेशन पे इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि ये ब्रॉथल चलाती है, ये माइनर्स को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलती है। जी हाँ, पनिश करिए, काफी सारे लॉज हैं इनके अगेंस्ट, पर उसका इस रेप से क्या रिलेशन? डिफेंस इन दोनों चीजों को रिलेट करके कोर्ट को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सजा दीजिए ब्रॉथल चलाने के लिए, मगर इंसाफ दीजिए चंदा को रेप होने के लिए। That's all. अब जाइए। योर ऑनर, मैं इस केस में एक और विटनेस बुलाना चाहता हूँ, चंदा। Proceed. चंदा हाजिर हो। चंदा, कोर्ट को ये बताइए कि उस रात आपके साथ क्या हुआ? जबरदस्ती हुई थी मेरे साथ। मैं एक आदमी के साथ अपनी मंजूरी से गई थी और वो होटल के कमरे में 6 लोग पहले से ही थे।
उससे कहा, तुझे क्या दिक्कत है? हाँ? तू तो वेश्या है ना? बड़ी मुश्किल से अपनी जान वहां से बचाकर भागी, और जब भागी भी तो जानते मेरे साथ क्या हुआ? जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरा इलाज तो दूर, मेरी जांच करने से भी इनकार कर दिया। कहा रपट लिखो, और पुलिस थाने में आपसे ने जो भद्दा व्यवहार किया, अब तो वेश्या है ना मैडम, और वेश्या कहाँ इंसान होती है, तो जानवर से भी बदतर होती है। उसे हंसने का, गाने का, माँ बनने का, स्कूल जाने का, जीवन जीने का अधिकार कहाँ होता है? कोई भी औरत अपने शौक से ही काम नहीं करती है मैडम। समाज उसे विषय आश्रित कर, उसे बुरी नजर से देखकर उसे मजबूर बना देता है। हमारी हाँ और ना सुनने वाला, समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता है। हाँ, मैंने मंजूरी दी थी एक आदमी को, अगर कोई भी औरत हो वो अपने शरीर को नोच खाने की मंजूरी थोड़ी ना देती है, भले ही वो किसी की गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, या फिर मेरी जैसी वेश्या। Your Honor, I request please interpose the party to judgment. सुना आपने कंसेंट के साथ क्या खेले हैं? Yes, Your Honor. She did consent to have sex for money, but not for rape. These are two different terms. सोसाइटी में आज प्रोस्टिट्यूट्स की ऐसी इमेज बना रखी है, वो कहावत होती है, लड़कियों की तो नाम में भी हाँ होती है। इसका फायदा उठा रहे समाज, और समाज में सिर्फ आम इंसान नहीं, पुलिस, प्रशासन, लेजिस्लेचर सब इंक्लूडेड है। कहने को तो बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, मगर उन्हें फॉलो कौन करता है? आज कोर्ट में जितने भी विटनेसेस पेश हुए, उनकी गवाही को कंक्लूड करके it can be safely assumed that Vijay Singh and 7 other men were guilty of rape, and they should be punished, and
section 365D of IPC. That's all. Defense, your closing. Your Honor, all the witnesses, as presented by the prosecution, have failed to prove beyond reasonable doubt, and also there is a lack of evidence. My client Vijay Singh has not raped Chandaji. It has not been proved. At the max, it could be stated that the police officer's mistake delayed justice for Chanda. However, it doesn't implicate my client Mr. Vijay Singh in the case. इसलिए मैं इस कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि उन पर लगाए हुए सारे झूठे इल्जामों से उनको बरी कर दिया जाए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है कि इस केस के अक्यूज विजय सिंह का इस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना था। The prosecution could not provide evidences or prove that Vijay Singh was guilty beyond reasonable doubt. Thus, Vijay Singh is acquitted from the said case. Also under section 166A of IPC, I initiate a separate case against the investigating officer, Mr. Shinde. और यह अदालत section 3 to section 8 of Immoral Trafficking Act 1956 के तहत दुर्गा देवी के खिलाफ एक अलग मुकदमा दर्ज करने का आदेश देती है। The court is adjourned. Dissatisfied with the decision of the Sessions Court, prosecution decided to file an appeal in the High Court against this decision of the Sessions judge. Though the said appeal was admitted by the High Court, however, much to the dismay of the appellants, the High Court judge upheld the decision of the Sessions judge and again acquitted Vijay Babu. Additionally, the High Court made the following observation in this case. Law recognizes that a woman, even of easy virtue, has personal dignity and honor. She cannot be violated. It must, however, be conceded that immoral character would still not be an absolutely irrelevant circumstance. It has the potential to render the story itself as incredible. It may take away probative force of the story, told as it is by a woman with no scruples or morals. Let down once again by the inability of the courts to be able to see the pain and sufferings of this human overshadowed by her vicious cycle of life, the appellants decided to knock the doors of the apex court of India in one final and desperate attempt to seek justice for Chanda and to ensure that she is allowed her share of undeprived dignity in our society. In the appeal of Union of India versus Vijay Singh, appeal number CA/2018/6738. All rise. You may sit, counsels.
Appellant's Symbiosis. Your Lordship, appearing in front of this court in the case of Union of India versus Vijay Singh are the appellant on behalf of the NGO and the victim. Your Lordship, this argument has been divided into two parts. Where the council would talk about the laws which has let down Chanda in the lower courts, and my co-counsel would speak about the plight of the rape as well as the injustice she faced, and also would provide the prayer. Much obliged, Your Lordship. Your Lordship, the council, the appellant would now like to proceed with the arguments. You may. Much obliged, Your Lordship. My Lord, in India, prostitution is not illegal per se, but the acts relating to it, like pimping, soliciting in a public space, opening and managing a brothel is also a crime. While the sex workers remain in the twilight of legal policies and legislation in India, wherein the silence of the law on the identity of sex workers has resulted in more violence in both public and private spaces. Your Honor, my client is an NGO that works for the rights of these workers who had been denied justice at two prior stages of this procedure. Your Honor, the question that arises here is why? Why they have not been given the justice they deserve? Because of the victim's livelihood is based on a socially objectionable act. An act which is not considered a righteous act in the eyes of society, which comes as a result of the discrimination and typecasting women into a binary classification system. Your Honor, this classification is so ingrained in our psyche that even this Honorable Court in Gaurav Jain versus the Union of India have referred them as the fallen woman. To the extent that even the police that is supposed to check the general public, and not only that, it has to uphold not just the law, but the spirit of law. In this case, Chanda was not just refused to file an FIR, but also humiliated as well as questioned on her character. Questions, I guess, merely because of her occupation. Your Honor, today we have an opportunity to attempt and take a positive step against the centuries of discrimination, apologies, Your Honor, the sex workers have been facing. And in process, set a precedent to invoke the very strands of such a delicate matter in the Indian judicial system. Your Honor, I would like my co-counsel to proceed with further arguments. You may co-counsel. Much obliged, Your Honor. Your Honor, victims of sexual abuse are guaranteed anonymity. Under Section 228A of IPC, disclosing the identity of a victim of a certain sexual offense is a crime. Section 146 of Evidence Act prohibits the questioning of a victim of rape along the line of a previous sexual history. Your Lordship, these provisions provide a Raksha Kavach for these women in a rape trial. But in this case, Chanda was humiliated, questioned and exploited just because of her profession, just because of her lifestyle. Your Honor, district court से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ नहीं मिला, मिली तो सिर्फ तारीख। ये कोई नई बात नहीं है। It is not something which has happened and it is new. But our
society has forever looked down on these women who have been raped. In our case, there's a woman who has been rendered helpless and is asking for justice. In the light of the issues, arguments advanced, and authorities cited, the counsel for the appellant humbly prays that the Honorable Court be pleased to adjudge, hold, and declare the concerned investigating officer accountable for his carelessness in dispersing his duties according to law. Secondly, convict Vijay Singh for the charges of rape and gendered violence. I pass any order that this Honorable Court may deem fit in the interest of equity, justice, and good conscience. For this act of kindness, the counsel for the appellant shall duty bound forever pay. That's all. Yes, respondents, I would like to hear your arguments now. Yes. This is the counsel on behalf of the respondents in the case of Asha versus State. Your Lordship, the crux of petitioner's opening is the various mistakes made by the police administration. I submit that the same is immaculate. This is a case where the process is the punishment, where the reputation of an upstanding pillar of the society has been dragged through the mud. My client was found innocent in the Sessions Court, and further the High Court also upheld the decision. Dragging this matter in Supreme Court is an abuse of process of law. The prosecutrix did not testify at the trial. She was absent when the Honorable High Court was seized of the matter. I have maintained from the very beginning that the sole motive behind this case has been to harass my client, a respectable member of the society, and the appellants have succeeded, Your Lordship. He was forced to defend himself at the trial. His name was dragged through the mud when the matter was before the Honorable High Court. Has he not been harassed enough, Your Lordship? The prosecutrix, simply to harass my client, is making the process the punishment. That's it. Your Honor, my co-counsel shall proceed with the further arguments. He may. Your Honor, I would like to read out the following findings. Go ahead, please. Though immoral character is not a self-standing criterion or consideration, other factors supporting the fact have very well established the innocence of my client. I urge your Lordship to take a sensible view of the matter and free my client from the process. That is the punishment. Reject this petition, my Lord. Reject this petition. And let justice be served. Let the society renew its faith that despite malified prosecutions like this one, malified petitions like this one, this court will cease with the lies. This court will defend the innocent and never let the process become the punishment again. That's all, Your Honor. I have gone through the history of this entire case. Read the file. Right from the court of first instance, through to its journey, to the court of first appeal. And now, I've heard all the arguments which have been presented before the Supreme Court by both the counsels. It is an extremely important matter which has been brought before this court today. The court does not wish to follow the trail that the lower courts in this case have followed. And I consider that this case deserves to be heard here, and so I accept the appeal and hear this case for a number of reasons.
This case is not just about Chanda or Shabnam or some Rosie or some Mitali. It concerns an entire part and a huge part of our society, which although has been guaranteed equal rights, but is somehow not able to enjoy them. Before I proceed any further, I would like to understand this cause better from a person who works with an NGO which has been present in India for the past 30 years, has extensive experience towards working for the upliftment of sex workers. Please call the amicus curiae, Sarla Diwan, in the court. Sarla Diwan, please appear in the court. Ma'am, you are somebody who works with the ground force. You are somebody who is extremely familiar with what goes around in the society. As you would obviously know, there are a large number of guidelines, a large number of precedents that the judicial system of India has already established, right from the era of Privy Council through to the present-day Supreme Court in 2018. Despite all of these precedents and guidelines and having an entire structure in the society in the form of institutions like police and the state government, why is it that this is not the first time that a similar case has been brought before the Supreme Court? Why is that despite all of these efforts being made by the judiciary of India, they go completely in vain? Why is that women like Chanda have to knock at the doors of this court time and again? Why? I have been working in this field of rehabilitation and upliftment of sex workers for the last 10 years, and I have noticed that Chanda is just one of those 1,000 women involved in the flesh trade who receive such grave injustice on a day-to-day basis. In our country, the government has laid down several guidelines for the safety of these sex workers. But in the ground reality, none of these guidelines are actually followed. The police treats them with utmost brutality. They are often threatened and beaten, and nobody listens to their complaints just for the mere fact that they are sex workers. Also in society, they are given no social acceptance. They are not accepted in residential societies. Their children cannot study in the same schools where your and my children would be studying. So it's a very sad case. Thank you, ma'am. Thank you so much for your valuable contribution in this case. It is extremely painful, counsels. It is extremely sad that despite all the efforts being made by the Indian judiciary, the core value of the society is what drives the condition of sex workers in India, and unfortunately not the Constitution of India, which time and again guarantees equal rights to the subjects of it and the citizens of India. I do not absolve institutions like the police of the inadequacy that they display in handling these cases. However, I feel that people like you and I, and the ones sitting before this court today, are also to be blamed equally.
We call ourselves an equal society. Are we equal? Does the society consider them equal? Just like Mrs. Diwan said in this quote, that the children of sex workers are not accepted in the society, just like their mothers. For what is their fault? They are also not given admission in the same schools that possibly other children of the same economic status would be invited into. Our society is equally responsible for the misconduct that has repeatedly been happening. I feel utter dismay in my brother judges sitting in the district, sessions and high courts which have dealt with matters similarly, and for what they hold as their judgment. They use terms like livelihood and profession for this unfortunate vicious circle of life that such women, and in fact sometimes even men, are involved in. Who wishes to indulge in such practices out of their own will, out of their own consent, as we say? To determine cases like these, we'll have to ensure that this consent is not taken in the similar meaning that most other sections deal with it. This consent, I'm sorry to say, is never free. Sex workers are forced into this profession and livelihood, just like my brother counsels here have also said before this court, because of the circumstances that such women are also sometimes born in. That being said, it is my utmost honor to be present before this court, holding the power that I do right now. For I am the last person who could have unturned this injustice being subjected over sex workers. Before I proceed with the ratio, I would like to put out a few guidelines for matters similar to be dealt with the judiciary in future. Calling names to such women intended to be used as derogatory remarks should be made completely unlawful. Nobody should be in a position to discriminate against such women solely based on their past or this vicious circle that they are unfortunately a part of. Moving on, there should be a specialized training imparted to police officers and medical officers which work with such cases on a day-to-day basis and on the ground. They should be sensitized and they should be made aware of the special and equal rights, if I may, of sex workers. They should understand that the society is making their job all the more difficult when it in itself is not easy. The state shall further compile a list of all officers which have been designated to work with sex workers and deal with their cases and their cases only, and publish this list in the Gazette of India once every year. There should be a stricter punishment for all public officials which deny sex workers their rights. Lastly, the state shall encourage sex workers to come ahead and be a part of the mainstream
mainstream society. Hereby, I advise that the state shall legislate on the following guidelines as quickly as possible. This profession, you said, Councillor, and in fact, even the judges in the High Court and the District Court said, I am sorry to say, but this is not a profession. And therefore, there should be no divide between the victims of rape cases of any other profession and the ones such as this one, as it is their special condition that they should be hurt even more. I also disagree with my brother judge sitting in the High Court that have labelled Chanda with an immoral character. I ask this question, is her character important in determining whether she was raped at the first place or not? Is anybody's character important? The only question is of consent, and consent shall not be driven by the characteristic of a woman. This label which has been put on Chanda and most other women, which has now gone in the records of India, should immediately be revoked. They are equals, they are same, they are exactly like you and I. As much as my heart pours out for women like Chanda and all the others involved in sex trade, and especially the ones which have undergone the atrocities put forth by the society and other men, I am also duty bound by the provisions of the legislations of India and the guidelines of the Indian judiciary. And thus, I hold that Vijay Singh is acquitted of all the charges because neither in the appeals have the counsels been able to prove his involvement beyond reasonable doubt. Additionally, this part is the only one that I uphold from the judgments passed by the lower courts. There shall be no order as to costs. The court is adjourned.
हेलो 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 First of all, I would like to thank all of you for being such a wonderful audience and being patient to see. Hello. 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 Next, I would like to thank Dr. Shashikala Gurpur, who suggested this theme of prostitution. Next, I would like to thank all my team, to all the people who have acted in this play. I'll call them one by one and introduce to you guys. First is Harshvardhan. Next is Anmol as Tai. Next is Oshi as Shabnam. Next is Mridula. Next is Megha, is not prostitute but a human. Next, Ananya as a human. Next, Manya as human. Next, Pratyush as a flirt. Next, Abhishek as a flirt. Next, Angela Thomas as a nurse. Next, Divya as judge. Next, Aprajita as human. Next, Meenakshi. Okay, Meenakshi. Next, Amrita. Next, Naina. Next, Divya. Next, Himansa. Next, Soham. Next, Karan Jaiswal as our in-house rapist. Next, Prashant Gupta. Next is Ankur Yadav as a Supreme Court advocate. Next is Ganesh Mishra. Next is Nipun Sahai Bhatnagar. Next, Navya Agnihotri. Next is Himanshu Tyagi. Next is Aditya Ladda. Then Rishabh. Abhishek. Mayank Chaturvedi. And Rishwan Jeti. And I am Pratyush Chaudhary. These people have worked for more than a month, day and night, thinking about their character, doing all the brainstorming activities which were necessary to get into the character. Especially the girls who played the roles of a prostitute. They have worked immensely. During the course of this play, during the course of preparation of this play, we have also visited NGOs like Saheli and have talked to them regarding the ground realities of this illness. Next, so I forgot someone, there's Devesh. Not just that,
we also have our music team. So music used in the play was not a, like it was self-composed by the students of Symbiosis Law School, some of the music. So I would like to call upon the music team for this play. Next, I call upon our technical teams who handle the lights and everything properly. Come up. And the most important person for this play, our director Sachin Kumar Malvi. Thank you guys, thank you. Love you. Guys, just the final part. It won't be an exaggeration on my part if I take the liberty of speaking for everybody here and tell the Law Theatre team just how speechless we probably are by that beautiful performance. Thank you, Law Theatre team, for giving us food for thought. It is difficult to convey our true gratitude to the director, Mr. Sachin Kumar Malvi, with mere words for his fruitful efforts and the time he has invested in this endeavor. I invite Dr. Shashikala Gurpur ma'am to felicitate Mr. Malvi. Sir. Before I call upon Sanjit Ganguly, co-convener, Symbhav 2018, to deliver the formal vote of thanks, I'd like to take one last moment of your time to personally thank every person who's come on stage today for their performance, without which our evenings would be significantly less enriching and beautiful. Thank you. Sanjit, over to you. Inaugurated by the Chief Minister of Maharashtra, with 3 massive pro nights with artists of international acclaim, with over 2,000 registered participants from the city of Pune and over 24 colleges from participating from across the country, including entries from the country of New Zealand. The stage for Symbiosis 2018 is truly set. All of this. But all of this would not be possible without the following people. At the very outset, I would like to thank, on behalf of the entire organizing committee of Symbiosis 2018, I would like to thank Professor S.B. Majumdar, Chancellor, Symbiosis International University, Dr. Vidya Yervadekar and Dr. Rajni Gupte, also from the Board of Management. I would like to extend our warmest gratitude to Dr. Shashikala Gurpur for her endless support throughout this entire journey. Ma'am, thank you so much for your support, your insights and all your help throughout. It would be incomplete for me to complete this address without our gracious thanks to Dr. Atmaram Shelke and Dr. Bindu Ronald, both of our deputy directors who have also helped us throughout the fest. And along with both of these members of faculty, we would like to thank all members of faculty who have helped us at every stretch and who we have troubled to help us on all 3 days so far. Lastly, but definitely not the least, we would like to thank the reason that Symbiosis happens. That is the volunteers of the fest.
Without the volunteers, there is no reason to organize the fest, and without volunteers, there is nobody to run the fest. So thank you so much. Last and not the least, we would like to thank Dr. Girish Abhyankar and Dr. Aprajita Mohanty, the teachers of the extracurricular cell, who organized today's cultural extravaganza. Once more, on behalf of the entire organizing committee, we would like to thank all the students who have come here today and all the students who were present with us yesterday today. Your support means everything to us, and it is the only reason as to why we've continued for these last months. Thank you once again, and see all at Symbiosis. I am just curious, how did you feel when you did these roles? Like when you were practicing, when you were feeling the conscience of those. It's like unlearning the law class and looking at them in the reality. Some kind of transformative experience you would have. Actually, especially the scene where he comes and he hits that whole violent. Even the scenes where the girls are standing and the boys come in front of us. And I think we all felt was really lucky about the surroundings we are. Because we have very nice males around us who are very respectful. But also it's really hard to get the. It's like there's so much of law. The law is so vast. But then when you do this, it's like you see the void in it. Like some things are untouched. It was difficult to get the expression on the face when someone's touching you like that and to feel that and show it on your face. It felt filthy. Who did the conversation, script writing? Everyone wrote their scenes beautifully. And ma'am, in fact, the makeup was also done by our college students. Yeah, she did. And Kanishka. Kanishka from Ma'am, she had third year. Yes, ma'am. And नव्या को उसने वो बिजली बोल के क्यों बोला? असली में बिजली. Thank you. You should relax tonight and tomorrow again back to Symbiosis. God bless you. Thank you so much. Search on the YouTube with the names. Okay. Thank you. Come on, war cry. अरे वीडियो है